To class of learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we are here to discuss about the inclusive school education. So what does mean by inclusive school? पहले ये करते हैं inclusive school क्या है या what is mean by the inclusive education. B.Ed करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर बोलो ये पेपर हर यूनिवर्सिटी हर प्रोसीजर में आपको करना है that you have to work out this particular paper. आपने कहा पेपर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इन स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है क्या, पहले कॉन्सेप्ट लेना. इंक्लूसिव स्कूल होता क्या? इट्स अ प्लेस और अ मॉडल, इट्स अ प्लेस और अ मॉडल वेयर द स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, स्पेशल नीड्स किड्स are working with the student, those are normal serious, those don't need any sort of special attention. I must say those are physically disabled or somehow been lacking. इन सबको एक साथ वर्कआउट करके एक ऐसा मॉडल फॉर्म करना जहां पे सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इस पेपर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले कुछ चीज दिमाग में रखते हैं. ये जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द स्टूडेंट along with the teacher, because teacher plays a vital role as a resource. वो एक रिसोर्स का काम प्ले कर रहा है, रिसोर्स जो कि काम करेगा आप सबके लिए. He'll work as a resource. तो टीचिंग की क्वालिटीज को रूल आउट करना है. We really need to work out that point. And then we need to know some important points. Sir, पेपर पैटर्न क्या होता है? नॉर्मली पेपर 40 नंबर का होता है हर यूनिवर्सिटी में. इट्स अ 40 मार्क पेपर. आपने कहा 40 नंबर का पेपर, तो इसमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजों की पैटर्न क्या करना है. पैटर्न भी नॉर्मली यही रहता है कि एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको वर्कआउट करने होते हैं. 4 मार्क्स ईच, यू हैव टू चूज. देखो मैंने पैटर्न को डील आउट किया, पेपर पैटर्न. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू वर्क आउट इज अ पेपर पैटर्न, जिसके अंदर एक शॉर्ट नोट कंपलसरी है. हमें उस शॉर्ट नोट के अंदर 2 पॉइंट होंगे, ए और बी. यू नीड टू चूज फ्रॉम द 3 और 4, कोई 2 चूज करने होंगे आपको, जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. उस शॉर्ट नोट को करना है कि उसकी लेंथ क्या होगी. सर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के कि सर लेंथ कितनी रखनी. अगर क्वेश्चन 4 नंबर का, क्वेश्चन 8 नंबर का है, क्वेश्चन 16 नंबर का है, तो उसकी लेंथ क्या रखेंगे. तो यार वो 4 नंबर का सिर्फ एक शीट मतलब एक ही साइड. अगर आपको क्वेश्चन 8 नंबर होता है दोनों साइड लीस्ट, अगर 16 का तो वो आप मल्टीपल करेंगे, मतलब 4 शीट्स लीस्ट. ये आपको याद रखनी कि इतना कम से कम लिखना है आपने. एंड देन शॉर्ट नोट करने के बाद आप आते हैं बेसिक्स पे. इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है. तो दिस क्लास इज ऑल अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. Seriously, this class is all about the expected question. Some of the students are having exam now. Seriously, कईयों के अभी एग्जाम है within week और 10 days, कईयों के एग्जाम है जून में. और ये क्लास जून वालों के लिए और अभी के लिए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन मैं बताना ना उनको ऑन टिप कर लेना. सीरियसली ऑन टिप कर लेना. और क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि क्वेश्चन वही आने वाले. How you guys are going to prepare these questions? रूल आउट करेंगे. हाँ, अगर वो क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो मेरे वीडियो लिंक्स में जाएं, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी. एक्सप्लेन किया मैंने सारे आंसर्स. Those who are watching first time, do subscribe the channel immediately, and don't forget to press the notification button too. And those who are watching, guys, share it. Share. The more you share, the more people are going to get help. That is, and then I really be motivated to make more videos. The first thing we need to work out is this course aims to develop an understanding of the culture, policy and practices that need to be addressed in order to create an inclusive school. सर एक इंक्लूसिव स्कूल क्रिएट करना है तो क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, क्या क्या चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, वो ध्यान रखते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, दैट इंक्लूजन और साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन of the disability and identity, उसको डील करता है. अब बच्चों ये बहुत सर आप हिंदी में नहीं बोलते, तो प्लीज मैं क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि जितना हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना करूंगा. बाकी के लिए आप प्लीज मेरे को टेस्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां पे. देन इट वर्क्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन. हम कितना चेंज ला सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में कितना चेंज ला सकते हैं. अब कॉन्सेप्ट आता है सर क्वेश्चंस की बात आ गई. It's time to work out the important questions. So guys, please write down now because this is something very important और मैं डील करने वाला हूं. Let's start now.
The first question you need to write down the short questions. जी हाँ, शुरू करते हैं short question से. I just make a place for the short questions so that you can write down. So guys, now look and start writing the question. The first question मैं बोला short note. So short note में सबसे पहले जो workout करना है, that is really important. The first is define. I repeat, define the parent-professional partnership. Define the parent-partner or parent-professional partnership. This is really important. आप लोगों ने short notes. सबसे पहला आ गया हमारा डिफाइन पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप. दिस दैट यू गाइस नीड टू वर्क आउट. हाँ, हर हाल में आपको ऑन टेम होना चाहिए. Now it is to define parent professional partnership. This is something very important for all those who really need to clear the inclusive education. Then jump up to the next one, that is again most important, that is national policy. I repeat, the national policy for the persons with disability. National policy for the persons with disability 2006, and this is the most expected one. National policy for the persons with disability 2006. You guys need to work out these. किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. I try to work out as soon as possible. And then we do have the next one, सर्व शिक्षा अभियान. Definitely the सर्व शिक्षा अभियान 2002. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिस्ट में आ सकता है. आप नो दैट इज द सर्व शिक्षा अभियान 2002. सर्व शिक्षा अभियान 2002. एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप आना चाहिए. एंड देन वी नीड टू वर्क आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली, आई रिपीट, विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड में आता है. कैरेक्टरिस्टिक्स of visually impaired children. Then the next one we need to work out, and that is none other than the expected, the plan of action. The plan of action क्या था? Is the plan of action 2008 we talked about? Was it plan of action that comes 1999? No sir, it's a plan of action. पूरा डिफाइन करना है. हाँ, अपडेट होता गया, उसको पूरा डिफाइन करना है. आपने प्लान ऑफ एक्शन. सो हमने अभी तक 5 किए हैं. दैट इज द डिफाइन द पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप. नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. देन सर्व शिक्षा अभियान 2002, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, and then the plan of action. And then we'll come to the next one, the mental retardation. Define mental retardation along with the characteristics. And their characteristics. So the mental retardation and their characteristics. And then come up to the next one, the slow learning.
द स्लो लर्निंग सर होगा द स्लो लर्नर्स कौन से होते हैं? स्कूल में टीचर्स कंप्लेंट होती है द योर किड इज अ स्लो लर्नर। अब ये स्लो लर्नर कौन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन होते हैं। द नेक्स्ट वन आई जस्ट राइट डाउन द स्लो लर्नर्स and then you need to work out the next point and that is none other than the video conferencing। क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एंड हाउ इट इज रियली गेटिंग मोर इंपॉर्टेंस डे बाय डे। डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग and come up to the last one। Here we are going to wind up वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो लास्ट आता है दैट इज पीयर ट्यूटरिंग। व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग? जहां बच्चा अपने बराबर के बच्चे को पढ़ा रहा होता है। पीयर ट्यूटरिंग विद अ ग्रुप इज टीचिंग टू ईच अदर। हम ग्रुप बनाते हैं, टीचिंग फॉर्म करता है ग्रुप को, वहां बच्चा एक दूसरे को पढ़ा रहा होता है, दैट इज पीयर ट्यूटरिंग। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चन फॉर शॉर्ट नोट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड नाउ टाइम टू राइट डाउन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सीरियसली द लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में अपना रखना है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट। राइट डाउन प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन व्हाट, उसे टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो में, तो प्लीज आप लिखेंगे। Now discuss the concept meaning, I repeat, discuss the concept meaning and the need of inclusive education। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको कंफर्म मिलने वाला है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर इट्स बैरियर्स। बैरियर्स अलग भी आ सकता है, पहले क्लियर होना, बैरियर्स एक आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो व्हाट आर इट्स बैरियर्स? आई रिपीट द क्वेश्चन, discuss the concept meaning and the need of inclusive education, what are its barriers। Jump up to the next question, question 2, that is what do you mean by locomotor? I repeat, what do you mean by the locomotor impairment? क्या होती है locomotor impairment? And then discuss the causes and treatment। Discuss the causes and treatment of locomotor or I repeat locomotor or orthopedically impaired children। I repeat the question, what do you mean by the locomotor impairment? Discuss the causes and treatment of locomotor or I repeat orthopedically impaired children। ये था क्वेश्चन नंबर 2। Time to move on to question number 3 and that is comment on the role of resource। Comment on the role of resource teacher, the one who teach the inclusive schools, really the one who teach in the inclusive schools। Comment on the role of resource teacher in teaching hearing impaired children। अभी hearing impaired children की बात है तो आपको hearing impaired पे आ सकता है और role of teacher in inclusive school education में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो फॉर्म से आ सकता है सीरियसली, either it comes for the hearing impaired or for those who teach in inclusive school, the role of teacher। Then jump up to the next one and that is not the least but the most important, discuss in detail the role of counseling। Discuss in detail the role of counseling। तो आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन you guys need to write down now। The question is what is cooperative learning? What is cooperative learning? क्या है cooperative learning? And then jump on the next one, discuss the goals and benefits। Discuss the goals and benefits of cooperative learning in inclusive education। Discuss the role and benefits of cooperative learning in inclusive education। Hope you guys are going to work out these questions। For more you need to like, share and subscribe if you think it's worth to watch and share। और जल्दी मिलते हैं with the important questions for B.Ed, those who are really working or waiting